Good afternoon, students. So today we are going to start our new topic, that is the structure of nephron. As the nephron जो है, it is the structural and functional unit of the kidney और the excretory system आप बोल सकते हैं. जैसे न्यूरॉन जो होता है हमारा नर्वस सिस्टम का एक जो structural and functional unit होता है, उसी तरह से the nephron is the structural and functional unit of kidney और the excretory system. Yes. नाउ अगर हम नेफ्रॉन की बात करते हैं तो हाउ इट इज़ कितना नेफ्रॉन्स जो है हमारे किडनी में होते हैं. सो इट इज़ अबाउट 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन पर किडनी. मीन्स इतने मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हमारे किडनी में होते हैं विच हेल्प इन फॉर द फिल्ट्रेशन एंड द excretion or absorption of the nutrients from the body and excrete the waste product in the form of urine. Yes, so it is the nephron which is present in millions in our single kidney. Yes, then size, regarding size, if we stretch the nephron, it will be the 3 centimeter long. And now come to the type. So in the type, it may be cortical nephron or the medullary nephron. So depending upon their structure, they are divided as the cortical nephron and juxtamedullary nephron. Regarding this, we are going to study more in this वीडियो. अब हम बात करते हैं मेन. वी आर टॉकिंग अबाउट द नेफ्रॉन. जो नेफ्रॉन का मेन जो है 80% जो नेफ्रॉन होते हैं, इट इज़ ऑफ कॉर्टिकल टाइप ऑफ नेफ्रॉन एंड 20% ऑफ नेफ्रॉन इज ऑफ जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन. सो हियर द मोस्ट टिपिकल टाइप ऑफ नेफ्रॉन, दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही होता है बट देयर some part is more in the medullary region and rather than the cortical region or the cortex region. Yes, so इसको हम और बाद में देखेंगे. So first we will see the what is the basic structure of nephron. Yes, so here these are the parts of nephron which we are going to see in this video. Yes, so first the Bowman capsule, neck, the proximal convoluted tubule, then loop of Henle, then distal convoluted tubules and collecting duct. These are the part of the nephron. Now see, this is the structure of nephron. ये क्या है? Structure of nephron है. Here you will see this is the cup-like structure आपको दिखाई दे रहा है, that you called as the Bowman capsule. You called as the Bowman capsule. ये जो रहता है it is cup shape का दिखाई दे रहा है. Yes, then after that the loop, there is a loop here and this loop it is present at कोई भी चीज़ का जब पहले कोई चीज़ होती है तो that you called as a proximal और वो बाद में रहे तो you called as a distal. So here the loop is present and this loop जो है help करता है for the absorption of the जो भी material होता है, absorption of nutrients. So here from this the maximum filtration will occur in this Bowman capsule and from there the filtrate will goes in. So जो भी filtrate यहाँ से निकलेगा then it will goes into the proximal convoluted tubule. This proximal convoluted tubule जो रहता है it is a highly coiled structure रहता है. highly coiled होने के कारण जो filtrate है वो बहुत धीरे धीरे यहाँ से move होगा, जिसके कारण क्या होगा, मैक्सिमम जो absorption है, जो यूजफुल मटेरियल का absorption है वो यहाँ पे हो सकता है. then it will goes into this loop and this loop is called as the loop of Henle. This is called as the loop of Henle. यहाँ पे आप देखेंगे is a descending limb और उसके बाद this is an ascending limb. So here this is called as the descending limb क्योंकि यहाँ से ये down जा रहा है, then it goes up. So here it is called as the ascending limb. Yes, so here this is the loop of Henle. Then from the filtrate from this loop of Henle goes to the
distal convoluted tubule that is also a coiled structure. ये भी कैसा है, coiled structure है. And from this distal convoluted tubule the filtrate will goes into the collecting duct. Yes, here you will see this is the cortex region, this is the cortex region, and this is the medullary region. Yes, this is the medullary region and this is the cortex region. कल हमने जब देखा था कि जो आप स्टडी करते वक्त लास्ट क्लास में वी विल सी कि हाँ वी हैड सीन कि यहाँ पे हमें इस तरह का स्ट्रक्चर हम देख रहे थे कि आपको यहाँ पे रीनल पिरामिड्स दिखे थे. रीनल पिरामिड्स में हमने देखा था कि हाफ ऑफ द रीनल पिरामिड्स इट इज़ इन द कॉर्टेक्स रीजन एंड हाफ ऑफ द रीनल पिरामिड इट इज़ इन द मेडुलरी रीजन. यस, देन द रीनल यहाँ पे आपको जो कोनिकल पार्ट दिख रहा था दैट यू कॉल्ड एज द रीनल पैपिले. यस, सो हियर यू विल ऑब्जर्व कि जो पार्ट है मैक्सिमम जो पार्ट है इट इज़ इन द कॉर्टेक्स रीजन. So here the Bowman capsule, proximal convoluted tubule, then distal convoluted tubules and collecting duct, they are mainly present in the cortex region. Yes, these are mainly present in the cortex region. And the loop of Henle, this loop of Henle, this is present in this medullary region. Yes, so because of this they seen like a pyramid. Yes, because of this structure, because of this nephron, they are seen like this. Yes, और इसके और हम स्टडी करेंगे. here the millions of nephron आप देखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट है and they are जो भी कुछ है this collecting duct से ये बाहर निकल रहा है and from there it goes into the जो minor calyx थे then it goes into the major calyx and from the renal pelvic then it goes into the convoluted tubules. Yes. Yes, so this is the structure which is we have discussed in the last class. So here this Bowman capsule, it is present here, proximal convoluted tubules, and this loop of Henle is goes into the medullary region, and from that it goes into distal convoluted region, and from that it goes collected into the terminal part. Yes, so this is how the millions of nephrons they are arranged in this manner in this in the kidney. Yes, so because of that the maximum part is present in the cortex region and less part is present in this medullary region. Because of that it gives it as a pyramid structure. Yes, from here the collecting dirt, they collect the urine and from it goes into this it goes into the minor calyx and from that here goes into the major calyx and from that it goes into the renal pelvis and from here it goes into this ureter. Yes, so this is how the nephrons are arranged in the kidney. Yes, now in this Bowman capsule what you observe कि यहाँ पे क्या हो रहा है, there is an artery is coming here. That artery is called as the afferent arteriole. It is called as afferent arteriole. This is broad in उसका जो diameter है it is broad and here it is divided into the small capillaries. यहाँ पे वो क्या हो रहा है, एक afferent arteriole आ रही है जो मोटी है and it get bifurcate, वो small capillaries में bifurcate हो रही है. small capillaries में bifurcate होने के बाद it will जो भी blood है it will goes by this afferent आर्टियोल. ये किससे जा रहा है, एफरेंट आर्टियोल से जा रहा है. अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि द डायमीटर ऑफ दिस एफरेंट आर्टियोल इज मोर एंड हियर द एफरेंट जो आर्टियोल है इसका जो डायमीटर है वो कैसा है, कम रहेगा. ये स्मॉल रहेगा एंड हियर इट इज़ अ वाइड. सो बिकॉज ऑफ डैट ये बहुत प्रेशर से यहाँ क्या आएगा, ब्लड आएगा एंड ब्लड आने के बाद यहाँ पे वो जो है कैपिलरीज में डिवाइड होगा एंड हियर द स्मॉल
जो एफरेंट आर्टियोल है ये बहुत स्मॉल है, जिसके कारण देर इज़ अ प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होगा। मतलब उस आते वक्त तो ब्लड है बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ रहा है, और उसके बाद इट इज़ डिवाइडेड इनटू कैपिलरीज, और जाते वक्त इट इज़ द नैरो, उसका डायमीटर कैसा हो जाता है, नैरो हो जाता है, जिसके कारण देर इज़ अ प्रेशर इज क्रिएटेड हियर, एंड बिकॉज ऑफ दैट देर इज़ अ मैक्सिमम, जो आप बोल सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, जो भी फिल्ट्रेशन है यहाँ पे क्या हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है, फिल्ट्रेशन यहाँ पे मैक्सिमम होगा बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर। यस, सो हियर द एफरेंट, ए फॉर कोई भी चीज़ के आने के लिए, एंड ई से आप बोल सकते हैं एग्जिट होना। सो एफरेंट आर्टियोल एंड इट इज़ द efferent arteriole. Yes, so here this is the, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, they all the capillaries, they reunite, और आप बोल सकते हैं they these capillaries or the bunch of capillary, it is called as glomerulus. It is called as glomerulus, and here this glomerulus and this Bowman capsule, they together called as Malpighian body. They together called as Malpighian body, or it also called as renal corpus corpus corpuscles. Yes, so here there is a glomerulus क्या है, it is a bunch of fine blood capillaries. Yes, ये फाइन कैपिलरीज है, बंच ऑफ फाइन कैपिलरीज है, एक दे आर प्रेजेंट इन द कप शेप structure that you called as the Bowman capsule. Yes, this is the Bowman capsule, in which this is the bunch of fine capillaries called as glomerulus is present, and the combination of this is called as the Malpighian body. It is also called as the renal corpuscles. So here, there the main filtration occur in this Malpighian body. Yes, so here the afferent arteriole is come here, and it is divided into fine capillaries, and it goes by the एफरेंट एफरेंट आर्टियल से ये बाहर निकल जाएगा, और उसके बाद जो भी बचा हुआ मटेरियल है, देन द फिल्ट्रेट्स कम इनटू दिस लूप, एंड इन दिस लूप आप देखेंगे हियर जो लूप है ये भी क्या है, यहाँ पे भी आप आगे जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो इट इज़ ऑल्सो सराउंडेड बाय स्मॉल कैपिलरीज, यहाँ पे भी स्मॉल कैपिलरीज जो रहती है उससे सराउंडेड रहती है, एंड दिस कैपिलरीज इज हेल्प फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ द सिलेक्टिव मटेरियल और द मटेरियल विच इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, विच इज़ यूजफुल फॉर आवर बॉडी, एंड अनवांटेड मटेरियल जो है वो वहाँ से रिलीज होते जाएगा, एंड इट गोज कलेक्टेड इनटू दिस कलेक्टिंग डक, वो उससे जो है वो एब्जॉर्ब होते जाएगा, कलेक्ट होते जाएगा. यस, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन. नाउ वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन, हम ये सब चीज़ों को, सभी पार्ट्स को हम डिटेल्स में देखेंगे. यस, so here nephron A are the structural and functional unit of kidney. Each nephron consists of 4 to 6 centimeter long thin walled tube, that is the renal tubule, and the bunch of capillaries, that is the glomerulus. So अगर हम एक nephron अगर बोले तो it is the, ये क्या है, एक bunch, और the bunch है यहाँ पे, bunch of capillaries है, that is the glomerulus, and there is a loop, ये आपको दिख रहा है, ये ट्यूब दिख रहा है. yes, so it is mainly renal tubule or tubule and a bunch of capillary, that is the glomerulus. yes, the wall of renal tubules is made up of single layer of epithelial cell. This जो ये जो लेयर दिख रही है, it is made up of single layer of epithelial cell, and it proximal end is wide, blind,
cup-like called the Bowman capsule, and distal end is open. This proximal end जो दिख रहा है आपको, this proximal end is wide, थोड़ा मोटा रहेगा, and blend and cup shape, while the distal end is open. जो उसका डिस्टल जो बाहर का दूसरे साइड का एरिया जो रहेगा दैट इज ओपन, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू बोमेन कैप्सूल, नेक, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, distal convoluted tubule, and collecting tubules. So this is the basic components or the basic parts of the nephron. Yes, then glomerulus is present in the cup-like cavity of Bowman capsule, and both are collectively known as renal corpuscles or the Malpighian body. Yes, we have discussed this कि जो Bowman capsule है, it is a cup shape and in which the जो bunch of capillaries दिख रही है that is the glomerulus. Yes, and they together form the Malpighian body. Yes, this is the base. This is the structure of Bowman capsule, and this is the glomerulus. Yes, then each Malpighian body is about 200 micrometer in diameter, consists of Bowman capsule and glomerulus. Yes, so first हम बात करते हैं glomerulus की. Glomerulus is a bunch of fine blood capillaries lying in the cup of Bowman capsule. A small terminal branch of renal artery called as, एक artery जो है, हमारा जो blood है, blood वो किडनी में जाता है, एंड वंस इज एंटर इनटू द किडनी देयर इज यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा. जो भी फिल्ट्रेशन होने के बाद जो मटेरियल जो भी फिल्ट्रेट रहता है, then that filtrate goes to this proximal convoluted tubules and to this loop of Henle and to the distal convoluted tubules, and the material जो भी बचता है that is the urine. Yes, so see how the mechanism is, कैसे ये mechanism work करता है, it is how it is working कि आपका जो blood है वो blood it get converted into the urine. So here all the things which is going to happen, the nephron it is the main part which are playing the main important role or in this work. यही जो काम होता है हमारा excretion का, so that is the nephron जो है उसमें basic main role play करता है. Yes, so here this जो blood है यहाँ से कहाँ से आएगा, दिस इज फ्रॉम द एफरेंट आर्टियोल से जो ब्लड है वो एंटर करेगा किसमें, ग्लोमेरुलस में. यस, सो हियर द स्मॉल टर्मिनल ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी कॉल्ड एज द एफरेंट आर्टियोल एंटर्स द कप कैविटी एंड अंडरगो एक्सटेंसिव फाइन ब्रांचिंग टू फॉर्म द नेटवर्क ऑफ सेवरल कैपिलरीज. यहाँ पे बहुत फाइन कैपिलरीज का नेटवर्क बनाएगा. दिस बंच इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस. The capillary wall is fenestrated. All capillaries reunite and form an afferent arteriole that leave the cup cavity. So here what is the basic structure? इस तरह से जो कैपिलरी है आर्टरी, जो रीनल आर्टरी यहाँ पे आएगी, then it is divided. ये इस तरह से ये डिवाइड होगी एंड अगेन इट इज रीयूनाइट. यस, सो इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एक डिवाइडेशन इस तरह से दिखाई देगा. मतलब जो आर्टरी आ रही है वो आने के बाद इट इज़ फर्दर डिवाइडेड एंड इट इज़ फर्दर रीयूनाइट. फिर से वो रीयूनाइट हो रही है. दिस इज़ द एफरेंट आर्टियोल, दिस इज़ द इफरेंट आर्टियोल. सो यहाँ से आने के बाद इट इज़ डिवाइडेड एंड अगेन इट इज़ देन कलेक्टेड. जो मटेरियल है वो वापस से वहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा. यस, सो द all capillaries reunite and form an efferent arteriole that leave the cup cavity. Diameter of efferent is greater than efferent arteriole to create a high hydrostatic pressure in glomerulus. Yes, उसमें glomerulus में
एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए द इसकी जो डायमीटर है एफरेंट का वो ज़्यादा रहेगा इफरेंट से, इफरेंट का कम रहेगा। यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अल्ट्राफिल्ट्रेशन। सो व्हाट इज़ द रोल, ऐसा क्यों रहेगा, बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फिल्ट्रेशन और द अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। यस, then this, from this figure you can easily see this is the Bowman capsule। उसको यहाँ पे क्या किया, और you call as a Malpighian body, जो यहाँ पे क्या किया है उसको थोड़ा मैग्नीफाई किया है। यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज द एफरेंट आर्टियोल जो अंदर आ रही है, इट इज देन फर्दर जो है वो जो फाइन कैपिलरीज में डिवाइड हो, उसके बाद इट इज द एफरेंट आर्टियोल जो है वो बाहर निकल रहा है। yes, so this is the magnifying picture of the Malpighian body। yes, then दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। यहाँ पे आपको डिफरेंट सेल्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से जो बोमेन कैप्सूल है, दिस बोमेन कैप्सूल इट इज़ मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, जिसमें आपको अंदर की जो लेयर है इट इज़ कॉल्ड एज द विसरल वॉल एंड द आउटर वॉल इट इज़ मेड अप ऑफ द पैरिटियल कॉल्ड एज द पैरिटियल वॉल, and this space in between this is called as the capsular space, and here this is the podocyte। this podocytes, ये जो है सेल्स के बीच में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, पोडोसाइट्स। the podocyte showing feet and slit pores in between, ये इनके बीच में आप देख रहे हो एक तरह से एक आपको फिट दिखाई देगा in between this cells। yes, then there is a cuboidal osmotic pressure, colloidal osmotic pressure of 30 mmHg is present here, then capsular hydrostatic pressure 15 mmHg, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है तो यहाँ पे ज़्यादा उसका प्रेशर रहेगा, दैट इज़ द 30 mmHg है, और वहीं पे ये प्रेशर धीरे धीरे कम होगा, सो इट इज़ 15 mmHg। yes, so in this is the neck जो दिख रहा है आपको, दिस इज द नेक रीजन ऑफ द नेफ्रॉन, एंड हियर दिस PCT cells are present, here this basal channels and their intercellular space, and this is the microvilli। this microvilli it is यहाँ पे आपको cilia present रहेगा, and it help in the absorption of the material। yes, so here this is the cup-like structure, Bowman capsule. It is the cup-like structure having double wall. yes, Bowman capsule having the double wall. Both walls are composed of squamous epithelial। squamous epithelial cells से वो बने हुए। There are different type of epithelial cells. So one of the cell is the squamous epithelial cell। The outer wall is called as the parietal। this is the outer wall, this is called as the parietal wall, and the inner wall is called as the visceral wall। there is a space called as the capsular space। yes, this is the capsular space, urinary space in between the two walls। the visceral wall consists of special type of squamous cells called as the podocytes having the foot-like pedicel। these podocytes are in close contact with the walls of capillaries of glomerulus। yes, ये जी दिख रहा है आपको, ये उन जो पोडो सेल्स से बने हुए हैं। इनर वॉल में आप देखेंगे जो स्क्वैमस एपिथेलियल सेल है, इन बिटवीन देम देयर इज अ पोडोसाइट सेल्स एंड दे आर इन क्लोज कांटेक्ट विद दिस ग्लोमेरुलस, उसके बहुत क्लोज कांटेक्ट में है। देयर इज अ स्मॉल स्लिट कॉल्ड एज द फिल्ट्रेशन स्लिट इन बिटवीन द एडजेसेंट पोडोसाइट्स। पैरिटियल वॉल इज थिन कंसिस्टिंग ऑफ द सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल, इट कंटिन्यू इनटू द नेक। जो पैरिटियल वॉल है, जो आउटर वॉल है, दिस आउटर वॉल इट इज मेड अप ऑफ द स्क्वैमस एपिथेलियल सेल एंड इट इज कंटिन्यू विद दिस नेक पार्ट। यस, उसके नेक पार्ट से वो कंटिन्यू। द वॉल ऑफ नेक इट इज मेड अप ऑफ ciliated epithelium, it is made up of ciliated epithelium। the lumen of neck is called as the
यूरिनरी पोल। जो उसका ल्यूमेन है, ल्यूमेन ऑफ नेक, दिस इज द ल्यूमेन ऑफ नेक, जो उसका बीच का पार्ट है, दैट ये कॉल्ड एज द यूरिनरी पोल। द नेक लीड्स टू द प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। जैसे ही दिस इज द बोमेन कैप्सूल, दिस इज द बोमेन कैप्सूल और द माल्फिजियन बॉडी, फ्रॉम हियर दिस इज द नेक पार्ट एंड फ्रॉम हियर द प्रॉक्सिमल convoluted tubules is started, उसका पार्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है। सो here this is the proximal convoluted tubule. This is the proximal convoluted tubule. This is the highly coiled part of nephron. It is lined by the cuboidal cell. Cuboidal cell means एक क्यूब की तरह जो सेल रहेंगे वो कैसे रहेंगे, क्यूब शेप में रहेंगे। यस, जो इपिथेलियल सारे ही जो सेल है यहाँ पे कैसे है, इपिथेलियल सेल है, बट देयर्स जो उनका टाइप्स है वो चेंज होते जाएगा। पहले यहाँ पे जो बोमेन कैप्सूल में देयर इज अ स्क्वैमश टाइप ऑफ सेल्स थे, नाउ इट इज द क्यूबॉइडल टाइप ऑफ सेल्स यू विल ऑब्जर्व इन द, ये क्यूबॉइडल क्यूब शेप के जो एपिथेलियल है ये कहाँ देखने मिलेंगे, इट इज इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में आपको देखने मिलेंगे। यस, सो इट इज द हाईली कॉइल्ड पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड पार्ट है। So it is lined by the cuboidal cell with brush border, that is the microvilli. Microvilli, this is the microvilli which is present in inner side of the wall. Yes, this is the cuboidal cell and this is the microvilli. Yes, and the surrounded by the peritubular capillaries. It is a place of selective reabsorption. यहीं पे क्या होगा, जो small capillaries है इसको surrounded रहेंगी। This capillaries will help for the absorption, जो absorb करने में help करती है। Yes, it is in this picture. यहाँ देखिए, this is the Bowman capsule. Yes, and here this is the proximal, ये दिख रहा है आपको, proximal convoluted tubule, and this is the loop of Henle, and this is the descending part, this is the ascending part, and here the distal convoluted tubule start हो रहा है और it will goes into this collecting duct, ये जा रहा है, and here the calyx, that is the minor calyx, and later on the major calyx and the renal pelvis उसमें जाएगा। yes, so अब ये जो नेफ्रॉन है आप देखो यहाँ पे, इट इज सराउंडेड बाय दिस कैपिलरीज, ये दिख रही है आपको ब्लू एंड रेड कलर में जो दिख रहा है, दैट इज द कैपिलरीज। यस, दिस इज द फाइन कैपिलरीज विच आर सराउंडेड टू दिस नेफ्रॉन एंड दिस हेल्प फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द मटेरियल फ्रॉम दिस कॉइल स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से जो भी मटेरियल हमारे काम का है वो एब्जॉर्ब कर लेगा वो कैपिलरी। Yes, so here इट इज़ द प्लेस ऑफ सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे उसको रीएब्जॉर्ब कर सकते हैं। ड्यू टू द कॉन्व्यूलेशन और द कॉइलिंग, फिल्ट्रेट्स फ्लो स्लोली, फिल्ट्रेट क्या है, धीरे धीरे वहाँ से मूव होगा, एंड रिमेन इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, और यहाँ पे बहुत समय के लिए वह वहाँ पे रहेगा, एंड दिस एंश्योर्स द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूजफुल मॉलिक्यूल्स, जो भी चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, वो सारे जो एब्जॉर्ब करने की जो प्रोसेस है वो मैक्सिमम यहाँ पे हो जाएगा, बिकॉज दिस इज़ द हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, और यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है वो क्या होगा, बहुत धीरे धीरे जो है ट्रैवल करेगा। यस, बिकॉज ऑफ डैट इट गेट बहुत ज़्यादा उसको टाइम मिल जाएगा, जिससे मैक्सिमम पार्ट जो है वो जो भी चीज़, जो भी मॉलिक्यूल, जो भी चीज़ है वो जल्दी वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेगा। यस, देन नेक्स्ट इज द लूप ऑफ हेनले। This is the U-shaped tube consisting of descending and ascending limb. Descending limb is thin-walled and permeable to water. It is lined with a simple squamous epithelial. Ascending limb is thick-walled and impermeable to water. मतलब अब ऐसा है कि जो this is the descending limb and this is the ascending limb. Yes, अब ये जो
डिसेंडिंग लिम्फ है, मतलब कोई चीज़ घट रही है, तो ये जो पार्ट रहेगा नेफ्रॉन का, इट इज़, ये यहाँ से वाटर क्या हो सकता है, यहाँ से वाटर जो है परमिएबल, मतलब वो एब्जॉर्ब हो सकता है, उसको वो वो जो सेल्स है दे विल परमिएबल फॉर द वाटर, बट after this loop of Henle, when the filtrate goes to this ascending limb, it is not permeable to the water. Yes, मतलब क्या हो रहा है, मैक्सिमम जो भी एब्जॉर्प्शन है वो यहाँ हो जा रहा है वाटर का, एंड देन the water is not allowed in this ascending limb. Yes, it is lined with a simple cuboidal epithelium. The loop of Henle is surrounded by capillaries called the vasa recta. These are the capillaries. These are the capillaries, and here these capillaries, it is called as the vasa recta. Loop of Henle, it is surrounded by the capillaries called as the vasa recta. Yes, its function is to operate counter current system, a mechanism for the osmoregulation. A regulation of salt and water balance in body is called the osmoregulation. The ascending limb of Henle loop lead to the distinct convoluted tubule. So here दिस जो वासा रेक्टा जो कैपिलरीज है, दिस कैपिलरी, यहाँ पे जो वासा रेक्टा कैपिलरी है विच इज प्रेजेंट इन द लूप ऑफ हैंडले, इट हैज़ द रोल इन द ऑस्मोरेगुलेशन. ऑस्मोरेगुलेशन मीन्स हमारे बॉडी में जो सॉल्ट एंड वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको बैलेंस करने का जो काम है वो कौन कर रहा है, हियर द कैपिलरी विच इज प्रेजेंट अराउंड दिस लूप ऑफ हैंडले, दैट इज द वासा रेक्टा. They help in the regulation of salt and water balance in the body, and it called as the osmoregulation. Yes, and after this the filtrate will goes into the ascending limb, and after the ascending limb the distal convoluted tubule जो है वो उसका portion जो है वो start हो जाएगा. So the distal convoluted tubule, it is the another coiled part of the nephron, and its wall consists of simple cuboidal epithelium. Distinct convoluted tubule perform tubular secretion, augmentation, active secretion in which the waste are taken up from surrounding capillaries and secreted into passing urine. Yes. So in the distinct convoluted tubule, it will perform the tabular secretion or augmentation. Augmentation means कोई चीज़ का बढ़ना, वृद्धि होना. So here the active secretion in which the waste is taken up from the surrounding capillaries. यहाँ पे जो distal convoluted tubule रहेगा, distal convoluted tubule से maximum, this is the last chance where जो क्या जो भी मटेरियल है वो एब्जॉर्ब करने का और जो भी अनवांटेड मटेरियल है उसको छोड़ने का जो काम है, दैट इज़ द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो है वो कर सकता है. एंड फ्रॉम वेयर द वेस्ट इज टेकन अप फ्रॉम द सराउंडिंग कैपिलरी, जो भी, एंड इज secreted into the passing urine. Yes, it is the last chance from where the molecules or the things which is important, it is the thing it is taken by the capillaries. ये उसके लिए लास्ट चांस रहेगा जहाँ पे जो भी बचा हुआ चीज़ रहेगा, it is then goes into this collecting duct in the form of urine. Yes. So the distinct convoluted tubules, it help in the water reabsorption and regulation of pH of the body fluids. Collecting tubule, this is the short and straight part of the distinct collecting tubules, and the collecting tubules, it reabsorb water and secrete proton. The collecting tubules open into collecting ducts. So here the दिस इज़ द कलेक्टिंग डक, एंड हियर द मेन जो पार्ट है और जो मेन जो फंक्शन है नेफ्रॉन का, ये यहाँ पे ख़त्म होता है कि कैसे इट विल हेल्प कि जो ब्लड हमारा आता है. सो हियर फ्रॉम दिस डायग्राम यू विल ऑब्जर्व कि नेफ्रॉन एंड उसके जो ब्लड कैपिलरीज जो नेटवर्क है ये कैसे यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है. यस. सो
अगर हम देखें मेन पार्ट्स तो इट इज़ द आर्ट्रियोल। कौन सी? इट इज़ द एफरेंट आर्ट्रियोल से जो ब्लड है ये हमारे बोमेन कैप्सूल में और द माल्फिजियन बॉडी में आ रहा है, दैट इज़ द ग्लोमेरुलस में आ रहा है। उसके बाद ये जो दिस इज़ द बोमेन कैप्सूल एंड दिस इज़ द ग्लोमेरुलस, और इसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो फिल्ट्रेशन होगा एंड आफ्टर दैट जो फिल्ट्रेट है इट विल गोज इनटू द लूप ऑफ हेनले, मतलब धीरे धीरे वो लूप में जाएगा। फर्स्ट इट गोज इनटू प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल फ्रॉम वेयर इट goes into the loop of Henle, from where it is going into distinct convoluted tubule, and from that here goes into the collecting duct. Yes. सो अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि जो नेफ्रॉन है इट इज़ कवर्ड बाय दिस ब्लड कैपिलरीज। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे पूरा नेटवर्क दिखाया हुआ है ब्लड कैपिलरीज का। सो मेन जो आ रही है दैट इज़ द रीनल आर्टरी, मतलब रीनल आर्टरी में मतलब जो हमारे जो किडनी में जो आर्टरी आ रही है दैट यू कॉल फर्स्ट कॉल्ड एज द रीनल आर्टरी। यस, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू दिस, दैट इज़ उसको अगर हम डिवाइड करते हैं सो इट इज़ डिवाइडेड, इट फॉर्म्स द रीनल आर्ट्रियोल। यस, ये रीनल आर्ट्रियोल बना रहा है। फ्रॉम दैट हियर द एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल जो है इट गोज इनटू दिस ग्लोमेरुलस दैट इज इन द वोमेन कैप्सूल, उसमें वो एंटर कर रहा है इन द ग्लोमेरुलस एंड फ्रॉम वेयर इट इज़ विद द हेल्प जो वहाँ पे पूरा फिल्ट्रेशन करेगा एंड आफ्टर दैट हियर द एफरेंट आर्ट्रियोल जो है ये बाहर निकल रहा है। यस, and this arteriole it then converted into this vein जो red color है, this is the ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा एंड हियर जो ब्लू दिख रहा है दिस इज़ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो पूरा फिल्ट्रेशन होने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल है वो कैपिलरीज से बाहर निकल जाएगा एंड इट अगेन गोज इनटू दिस हार्ट। यस, सो दिस इज हाउ द फिल्ट्रेशन इज अकर। यस, फर्स्ट द renal artery, this is the renal artery, then this renal arteriole, then afferent this is the afferent arteriole, then in the glomerular capillaries, this is the glomerular capillaries, then this is the efferent arteriole. From the efferent arteriole it goes into the peritubular capillary of network, this is the peritubular capillary, this is the peritubular capillary. Yes, then the renal venules, this is the renal venules। उसके बाद ये कलेक्ट होगा, यहाँ पे पूरा ब्लड वापस कलेक्ट होने के बाद जो वेन्स है वेन से ये वापस पूरा निकल जाएगा। यस, दिस इज हाउ द वर्किंग सिस्टम ऑफ और द वर्क nephron and the capillary network of the nephron is presenting here. Yes, now there is यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर है वो ख़त्म होता है ऑफ द नेफ्रॉन। यस, हियर जो हमने स्टार्ट किया था, सो देयर वी हैव डिस्कस अबाउट देयर इज अ टू टाइप ऑफ नेफ्रॉन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन इन द ह्यूमन किडनी, दैट इज द कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड द juxtamedullary nephron. So here we discuss what is the difference between them. So the cortical nephrons with shorter loop of Henle which extend very little in the medulla. अगर हम देखेंगे so here this is the cortical region, this is the cortical nephron. yes, ये जो है this is the cortical nephron और यहाँ पे क्या रहेगा cortical nephron with the shorter loop of Henle which extend very little in the medulla. Most of the nephron are the cortical nephron and few nephrons have longer loop of Henle that run deep into the medulla and these are called as the juxtamedullary nephron. So this is the cortical nephron and in the nephron where the loop of Henle is very deep in the medulla region, so that nephron is called as the juxtamedullary nephron. So on the basis of their structure or on their location, they are of two type of nephron, cortical nephron and juxtamedullary nephron. In the cortical nephron, this is the loop of Henle
ये उनका कैसे रहेगा, शॉर्ट रहेगा, एंड शॉर्ट होने के कारण वो ज़्यादा डीप नहीं जाएगा मेडुलर रीजन में। वहीं एक्स्ट्रा मेडुलरी रीजन जो नेफ्रॉन जो है उसमें लूप ऑफ हेनले लॉन्ग रहेगा, जिसके कारण वो डीप जो है मेडुलर रीजन में वो जाएगा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू नेफ्रॉन। बट द मैक्सिमम पार्ट और जो मैक्सिमम नेफ्रॉन रहता है इट इज ऑफ द कॉर्टिकल नेफ्रॉन। यस, so a small branch of efferent arteriole from the peritoneal capillary network around the distal convoluted tubule and proximal convoluted tubules and Henle loop of cortical nephron also form a loop-shaped vasa recta around the Henle loop of juxtamedullary nephron. So this is the, ये जो आपको ये जो दिख रहा है, this is ये एक तरह से एक जाल बना रहा है, and that you called as the here the capillaries around the loop of Henle, it is called as the vasa rectae. Yes, and the nephron, so the main role of nephron, it is responsible for elimination of waste, and it also helpful in to maintain the osmoregulation, hence are nicely supplied with blood. Here the blood है वो supplied होता है, and about 1/4 of the cardiac output is supplied to the kidney. जो हमारा जो हार्ट से जो मैक्सिमम जो ब्लड आता है उसमें से 1/4 जो ब्लड है हमारी किडनी की तरफ जाता है। यस, सो हियर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम कम फ्रॉम दिस आर्टरी एंड दिस ब्लू कलर जो दिख रहा है, दिस आर द वेन्स विच कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो सारा जो ब्लड है, ब्लड हमारा ये आएगा, इट गोज इनटू दिस ग्लोमेरुलस, यहाँ पे मैक्सिमम फिल्ट्रेशन होगा। जो मैक्सिमम फिल्टर, जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो कुछ भी है वो सारा कुछ किस में रहता है, हमारे ब्लड में रहता है, एंड ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन द ब्लड, एंड दिस ब्लड गोज इनटू दिस माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, माल्फिजियन बॉडी, एंड फ्रॉम दिस माल्फिजियन बॉडी द मैक्सिमम जो है फिल्ट्रेशन होगा, एंड दैट फिल्ट्रेट विल गोज इनटू विद दिस लूप, एंड दिस लूप, ये जो लूप है यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा, जो भी मॉलिक्यूल्स है उनका जो हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल है, एंड जो वेस्ट मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इट विल कलेक्टेड इन दिस कलेक्टिंग डक्ट एंड गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। यस, सो दिस इज हाउ, आप देखिए कितना ये प्रोसेस इतनी अलग है कि जो रेड कलर का आपका ब्लड यहाँ पे आ रहा है, देन इट विल कन्वर्टेड इनटू द येलो कलर यूरिन। यस, सो और सो कैसे ये प्रोसेस होता है, सो द ऑल द प्रोसेस हैपनिंग हियर। यस, हियर दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। आज जो हमने देखा ये जो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन हमने देखा। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी कि कैसे ये एब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ कौन सी चीज़ एब्जॉर्ब होती है, कहाँ कौन सी चीज़ जो है उसको छोड़ दिया जाता है। सो ऑल द प्रोसेस वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट क्लास। सो दिस इज हाउ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, एंड इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यस, सो होप यू विल, आपको ये जो वीडियो है वो समझ में आया होगा। सो सी इन द नेक्स्ट क्लास, गुड बाय।